गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबको स्वागत है दोबारा। आज हमारे साथ थोड़ी देर में जनरल शौकीन चौहान, जो हमारे पुराने दोस्त हैं, वो गनर शॉट में वापस आएंगे और म्यांमार के बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे म्यांमार कहाँ जा रहा है। राइट, ये एक इम्पोर्टेंट जगह है हमारे लिए। और म्यांमार जो फरवरी 21 से लेकर अभी तक वो मिलिट्री शासन के अंदर आ गया, उसके बारे में क्या हो रहा है, क्या गतिविधियां हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है देश की सुरक्षा के लिए और चीजों के लिए भी। राइट, हम पहले, इससे पहले कि मैं जनरल चौहान साहब हमारे शो में आए, मैं आपको थोड़ा चंद बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा। म्यांमार में क्या है, म्यांमार के बारे में आपको वाकिफ कराऊंगा, ताकि वो जब आए वो अपने क्लियर बताएंगे कि म्यांमार क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है और वगैरह वगैरह। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, म्यांमार इज दैट द प्रॉब्लम विद म्यांमार इज दैट इट इज रूल्ड बाय अ क्वीन एंड अ किंग, बट दे आर नॉट मैरिड टू ईच अदर। ये किसी ने बताया और कितना दुरुस्त बताया, क्योंकि वो दो, एक राजा और रानी है, वो एक दूसरे के खिलाफ है। राइट, दूसरी बात यह है कि म्यांमार का जो लोकेशन है, बहुत लोग मिस कर देते हैं कि ये इंडो पैसिफिक के बिल्कुल सेंटर में है। राइट, ये बिल्कुल सेंटर में है। अगर इंडो पैसिफिक का पूरा जो आर्किटेक्चर अगर सफल होना है जिस तरीके से हम चाहते हैं, या हम मतलब इंक्लूडिंग क्वाड, राइट, म्यांमार में शांति होना बहुत अनिवार्य है। राइट, तीसरी बात, म्यांमार क्या है, आप ये अगर आप स्लाइड देखेंगे तो बड़ा क्लियर होगा। म्यांमार ऐसी जगह है जहां जिसका इसके बाउंड्रीज बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, लाओस और थाईलैंड के साथ जुड़ता है। और इसका एक लंबा कोस्ट लाइन है जो 2,500 तकरीबन 2,200 किलोमीटर दूरी है। इट इज अ सेंटर पीस। ये एशियन, चाइना और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर आप म्यांमार को थोड़ा बारीकी से देखें, इसके नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि उत्तर की तरफ चाइना, राइट, ईस्ट में इंडिया और वेस्ट में लाओस और कंबोडिया, ये तीनों साइड से ये हिल्स एंड वैली से इट्स कवर्ड। अगर आप ये लेफ्ट में जो मैप देखेंगे उसमें देखेंगे तो ब्राउन कलर का है पूरा। और इसमें 3-4 मेजर नदियां बहती हैं, वो है चिंदविन, इरावाडी, सालविन और सीतोंग। ये जो राइट में जो मैप है उसमें दिया है। और ये सारे नदियां नॉर्थ टू साउथ बहती है। और इसके बीच में जो ग्रीन इलाका है जो लेफ्ट के मैप में दिखाया गया है, वो पूरा एग्रीकल्चरल लैंड, और इसका जो आबादी है ये वैलीज में रहते हैं। ओके, इसका काफी कॉम्पोजिशन अगर हम देखेंगे तो कॉम्पोजिशन इस प्रकार है। राइट, और ये बुद्धिज्म 89%, क्रिश्चियनिटी 5%, इस्लाम 3.8%, हिंदुइज्म 0.5% और बाकी बाकी। और अगर हम टोटल देखेंगे तो म्यांमार के अंदर 135 नेशनल रेसेस हैं। राइट, और एक और मैप ये मैं दिखाना चाहता हूं, ये जो आप देख रहे हो कुनमिंग से लेकर म्यांमार तक और क्याकपू और यांगोन तक, इसको बोलते हैं चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर का रास्ता। और ये जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारा पूरा पूर्वोत्तर इंडिया को आउटफ्लैंक करता है। अगर इस यहाँ से कोई चाइना का मूव हो गया तो काफी हानिकार हो गया होगा। इसके साथ मैं अभी इसके साथ मैं अभी जनरल शौकीन चौहान को मैं वेलकम करता हूं। जनरल चौहान, वेलकम टू द शो। आई हैव जस्ट गिवन अ प्रीएम्बल टू एवरीवन। द फ्लोर इज योर्स। Thank you, sir.
for inviting me, for getting me to be a part of the show. I have always enjoyed talking to you. I've always enjoyed this conversation. And it's always important for us to know what exactly does Myanmar mean for us. क्यों हमारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट है? आपने बहुत बहुत अच्छी तरह से बताया कि ये सेंटर है इंडिया बिटवीन इंडिया एंड द आसियान. All the movement of any land connect that we have between India and the ASEAN has to go through Myanmar. ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है सर. तो हम म्यांमार को इग्नोर नहीं कर सकते. दूसरी बात सर, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो हमारी म्यांमार की जो बात है, कहानी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि आप देखिए हमारे म्यांमार में Yeah, I'll add to जो the stream bit. Yeah, हाँ, whenever you want, whichever slide you want, we'll put it on. have you got it now? Yeah, I got it. Okay. I want the cross connects. Yeah. This तो one? यही है ना? हाँ, या Okay. हाँ, क्रॉस कनेक्ट. अभी आप देखेंगे, दिस इज अ मैप ऑफ इंडिया कनेक्टिंग म्यांमार. और अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं और हम देखते हैं कि हिस्ट्री में हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो कहाँ से आए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ. मैं न्यूलिथिक एज की बारे में बात कर रहा हूँ. 1500 BC, दैट मीन्स 3500 पहले, 100 साल, 3500 साल पहले ये था हमारा क्रॉस कनेक्ट. जो लोग ऊपर से नीचे आए हैं, ये आपको दिखाएंगे कि हमारे जो खासीज 1000 BC में म्यांमार से माइग्रेट करके हमारे नॉर्थ ईस्ट में आए. फिर हमारे जो ट्रेडर्स थे, इंडियन ट्रेडर्स, साउथ ईस्ट एशिया से to Burma, moved in the 2nd century BC. What did they carry with them? They carried Buddhism, goods, India's culture. And that is how the culture of India and Buddhism spread from India to Myanmar and to the rest of the ASEAN countries. But what was important? And as it spread, what did it take with them? It took our own people. So the cross connect is that as people of Myanmar spread across into India or migrated into India, Indian traders, Indian people also carried our message across to Myanmar and to the rest of the ASEAN countries, and that is how we are connected. 630 AD में a very famous Chinese traveler called Hyun traveled to Kamrup, which is now Assam, from China in 630 AD. The Ahoms, which are a part of Assam today, very important part, arrived in northeast India from Upper Burma, Yunnan border, in the 13th century, followed by the Khamtis and the Kamyangs. Ayutthaya, the ancient capital of Thailand, in 13th century AD was named after Ayodhya under the influence of Indian settlers. The Mughals invaded the Ahom kingdom from 13th century onwards, but could capture areas only till Guwahati in the 16th century. That means for 3 centuries, the Ahoms kept the Mughals at bay. They did not allow the Mughals to capture. The Nagas, the Kukis, the Mizos, the Lushais came from Upper Burma and Yunnan. The Assamese slaves were brought in by the Kachins, settled in the 17th century. After the British annexation of Burma in 1885, the people of northeast India also settled in Burma and vice versa. This is the Burmese Empire, 1822. So just see how it spread. The Burmese Empire had spread right across into India, into what is today's India. Golpara, just north of Golpara, looking at Bhutan, the Khasi Hills, were all a part of the Burmese Empire.
After the first Anglo-Burma War, 1824 to 26, 1852-53, Third War 1885. This is how the Burmese Empire was defeated and then completely taken over by the British by 1885. ये देखिए आप. So when we talk of historical perspective, we must be very, very clear that India and Burma are connected to each other. So over to you. Yeah, you can change the slide whichever way you want. Okay, okay. There's a at the bottom you'll find slide with the arrow. You can do that. बिल्कुल सर. Okay. So now when we have this kind of cross connect, sir, what is the historical perspective? That is important for us to know. When we are clear that India is connected to the tribes of Burma, and the tribes of Burma have immigrated into India, what should also be clear is that you cannot keep the Northeast away from Burma, because all the tribes of Burma, of India, of the Northeast of India, actually see their background for Burma. So if you say that there is a coup in Burma, as there is, but we wanted to seal our borders, those border sealing could not be done. The reason is that all the people of Burma, all the people surrounding the borders between India and Burma, owe their background, owe their origin to some place in Burma close to the border. So this is important because any security problem that happens in Burma will have its effect in Northeast India. And that's the reason why we must always make sure that Burma must always be with us. The people of Myanmar and India are two brothers. We have no option but to do and be with each other. This, when you trace this history backwards, you realize how important this is. We have a border with Burma that is 1776 kilometers long, 1776 kilometers, of which 145 to 154 kilometers is undemarcated. Why? Because Burma refused to demarcate that part north, which is in northern Arunachal Pradesh, because they said till the tri-junction, that is the tri-junction between Myanmar, India and Tibet, because they said that you first sort out the problem with China, then we will demarcate the problem between us and you in these 154 kilometers. And this is the reason why anything that happens in that tri-junction, anything that happens in Burma, any problem that happens anywhere will result in the people of Burma moving into India, or those tribes moving into India, or vice versa. It also means that the weapons, the narcotics come along with the people. When we talk of security in the Northeast, we must understand that all the insurgency groups fighting the the military government in Burma are also being helped out by the people in India. We may not like it, but there is nothing we can do. The reason is that the 1776 kilometers, though demarcated, is does not have any kind of fence. And also legally, 16 kilometers on either side has been declared as a free move regime. That means people living in the villages of 16 kilometers between both sides are allowed to carry headloads and to trade with each other. This again changes quite a few situations.
When you have 16 kilometers, that means you can't have a fence. That means the people cannot be policed. And because the people of Myanmar, their knowledge of people living in those 16 kilometers is unknown to us, you can't stop them from coming here. So that's the first issue when we deal with Burma. The second is, as you said, there's a king and a queen. The queen is Aung San Suu Kyi, and the king is the chief of the Burmese National Army, the Tat Madaw, or as you call the Myanmar National Army. And the two don't get along. The chief of the Tat Madaw does not agree that the queen needs to be the ruler. And the queen, because she is the daughter of General Neven, will not bow down to the chief of the Tat Madaw. This will be a perennial problem till one destroys the other. So this is the second conundrum. The first is that they exist. Second, they don't like each other. Third, whatever happens, one has to fall for the second one to have to rise. That means you can't have peace. The Tatmadaw or the Burmese National Army or the Myanmar National Army is the ruler today. 5 years ago or 3 years ago, it was Aung San Suu Kyi. Even when she was the prime minister, the home minister, the defense minister, and the finance minister were generals of the Tatmadaw. Power that they never allowed Aung San Suu Kyi to have. The fourth issue is that 60% of Myanmar is ruled by insurgent groups. Some who owe allegiance to the Tatmadaw, some who are fighting the Tatmadaw. The Arakan Army, the Arakan Liberation Army, which is linked to us through Mizoram, is fighting the Tatmadaw. So they often come in through the unmanned places of the Indo-Myanmar border and try and make their camps inside India. These camps are repeatedly raided by the Assam Rifles, who is now trying its best to extend its posts across the 1760 kilometers that exists. But with 21 odd battalions holding the Indo-Myanmar border with the rest of the 25 battalions involved in counterinsurgency, it means that each battalion is actually trying to police a gap of 100 kilometers, which is almost impossible. Why? Because the jungles are so bad, the roads are so bad, the issues are so bad. So these are the reasons why, sir, these are the main issues what prevent us from trying to bring peace and from trying to make sure that we cut ourselves off from Myanmar, which neither of which we can do. And therefore, I have always said, sir, that the government of India must be very, very practical. There is a power dispute in Myanmar. It is not our dispute. This dispute will continue. But we should deal with the government of the day. It doesn't matter who it is. Because a lot of our security issues are based out of out of Burma or out of Myanmar. 55 camps. I wonder how many of our viewers are aware that the Indian insurgent groups have 55 plus camps inside Myanmar. And the main insurgent groups are the NSCN IM, the NSCN Kaplang or the NSCN K group, the PLA, and a host of other Kuki insurgent groups and Manipur Mighty insurgent groups. Along with it, any small insurgent group that has a problem merely crosses into Myanmar and establishes a camp there. And if they are beyond the 30 or 40 kilometer line from the border,
They are safe because we can't launch operations inside 40 kilometers. When you look at these issues, sir, and I have gone to Myanmar many times, I have discussed these issues, the security issues with the Tatmadaw. They always say that you give us proof. And no matter how much proof you give them, they are unable to carry out operations against the Tatmadaw. So Burma becomes more and more important because we are trying to develop the Northeast in two ways, sir. One is we are trying to bring up the people of the Northeast. Secondly, we're trying to push in infrastructure, introduce manufacturing, introduce businesses, bring up educational institutions. But our problem is that without the security, inherent security to all these institutions, none of these institutions will survive in the Northeast until we get peace. It's a conundrum, sir. You have to have peace with the Naga groups. You have to sign a final agreement with the Naga groups. You have to sign an agreement with the Tatmadaw. You have to police your border in such a way that you are able to intercept each and every movement inside. You have to prevent illegal smuggling. You have to prevent illegal gun running. And you have to secure your Northeast. Now, let me show you, sir. If you just go to the images of the Indo-Myanmar border, sir. This is slide. Okay, I'll just add to the stream. You tell. Yeah. Yeah. Now, if you go to the diverse Northeast, this is a list, a slide of the tribes that are there in the Wait, Northeast. wait, wait. I can't see this list. I can Ah, only go slide by slide. Okay, 9, it's slide 9. slide 9 is okay. This one, yeah. Ah. Now, if you see, sir, this is the population of our Northeast. Arunachal, all the tribes of Arunachal Pradesh, 99% of the tribes in Assam, all the tribes in Meghalaya, all the tribes in Nagaland, Manipur, and Mizoram, all have their origin inside from Myanmar. And that is why it is so important, sir. So, when we talk of peace, sir, there has to be peace in three ways. You have to have peace along this border. That means you have to be capable of policing the Indo Myanmar border. That's the first thing. Secondly, you and the government of Myanmar, whoever it is, India and the government of Myanmar, have to be permanent friends, not permanent adversaries. Thirdly, the people of the Northeast have to understand and have to have their stake in the economic development of India because it is only the people who can stop this infiltration from Myanmar. Thirdly, sir, we did take our mind back to the Second World War. You and me have both studied uh, Yeah, the the Burma complete campaign. Burma campaign, yes. When you see and when you trace out, sir, how the Japanese forces entered India from China and came to Manipur and finally came down to Kohima, you realize how easy it is for the Chinese forces to do similarly. The route is very clearly marked. If the Japanese in 1942, 43, 44, 45 could enter India with the resources of that time, you can imagine what the PLA can do today. That means not only are you securing the Arunachal Pradesh border or the Ladakh border, you also have to secure this border. This becomes equally important, which is why anything that happens in Myanmar will continue to affect us. Now, what is happening in Myanmar?
In 1920, in 2021, the Tatmadaw again took over, deposed Aung San Suu Kyi, and took over the government. A week back, the Tatmadaw has bombed using airplanes a village in the Sagaing district and killed over 100 people. The BBC talks of 170 dead. That means whatever little chance there was of any kind of reconciliation between the Queen and the King, that chance is more or less gone. Gone. More or less gone. The Queen is in jail. The fourth part is that the Tatmadaw now is preparing for an election sometime in November, December. The electoral lists are being made, the electoral rolls are being made. He might be planning a party of the Tatmadaw. And if they ban everybody else, then they get legitimacy to the power that is there. And if that happens, India must deal with the government of the day there, which is we cannot be talking of democracy, we cannot be talking of human rights, cannot be talking of all this when the security, the safety, the economic well-being of the entire Northeast is dependent on Myanmar. So not only do we have a China problem, we have a people problem. We tried to tell the government of Meghalaya that they should not permit the refugees to come in from on their borders. I remember the chief minister of Meghalaya telling me, he says, General, our background is from there. How can we not allow our brothers and sisters to come in and stay with us? So if the people are willing to support them, then we can't stop them. Which is why this movement to secure our Northeast can only come from the people of that place. So these are the issues that I wanted to highlight, sir, and we can go ahead with any other issue you want. या आई वुड आपने जो बताया है वो बहुत अहम चीज बताए हैं आपने कि नॉर्थ ईस्ट का सिक्योरिटी जो है वो हमारे लोगों के ऊपर निर्भर है. जब तक Absolutely. हमारे लोग सिक्योर नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का सिक्योरिटी लड़खड़ाता रहेगा. और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनके हिस्टोरिक संबंध है, सिविलाइजेशनल संबंध है जो म्यांमार से हैं, और इनका जो आना जाना अक्रॉस द बॉर्डर नॉर्मल लगा रहता है. और जितने हमारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके वहाँ कैंप्स हैं, और इसीलिए अगर कोई इंसर्जेंट ग्रुप यहाँ हो गया शुरू तो चट से लेकर एक छोटा सा कैंप वहाँ बना लेता है और वहाँ जाके बस लेता है और वहाँ से लेकर यहाँ आके प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. करेक्ट, राइट. तो ये हमारा हिस्टोरिक और प्रॉब्लम ऑल्सो चाइना का जो मूवमेंट है. नहीं आता हूँ चाइना के ऊपर. तो ये हमारा हिस्टोरिक प्रॉब्लम है, और जब भी हमारा नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होता है तो आप देखेंगे कि वहाँ के कैंप बढ़ जाते हैं और आना जाना क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट बढ़ता रहता है. और जिस इलाके में डेवलपमेंट ज्यादा हो गया और एजुकेशन ज्यादा हो गया और लोग का मेल मिलाप इंडियन गवर्नमेंट से और सब ज्यादा हो गया, तो वहां से ये इंसर्जेंसी कम होता गया है. अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लूं तो मेरा भी वहाँ 2-3 पोस्टिंग हो चुका है और मैं वहाँ एक ब्रिगेड कमांडर भी किया हूँ ऑन ग्राउंड. तो जो शौकीन साहब बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं. वहाँ का जंगल इतने घने हैं कि आप अगर उस घने जंगल में घुस जाओ तो 100 मीटर के दूर में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चलता. ये जो 20-21 बटालियन जो ओवर 2,500 किलोमीटर जो फैले हुए हैं असम राइफल के, वो एक आदमी इधर से निकल जाता है उसके पीछे से एक और टोली निकल आती है. तो इतना पोरस है बॉर्डर. राइट. इस अवस्था में जो भी गतिविधियां म्यांमार के अंदर हो रहे हैं उसका असर हमारे तीनों पूर्वोत्तर राज्य यानी कि मिजोरम सबसे नीचे, उसके ऊपर मणिपुर और उसके बाद नागालैंड और सबसे ऊपर अरुणाचल के ऊपर भी असर होगा और असर हो रहा था और होता ही रहेगा
जब तक हम अपने लोगों को नहीं संभाल सकते और हमारा लोगों की गतिविधियां को हम कंट्रोल नहीं कर सकते और उनका जो इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ हम तालमेल नहीं रखते और ये सीज फायर नहीं साइन करते। राइट। रही बात म्यांमार की, म्यांमार में जैसे मैंने पहला स्लाइड दिखाया, एक राजा है एक रानी है, वो दोनों एक दूसरे से जुड़ते नहीं है, एक दूसरे से अगेंस्ट हैं और विरोध हैं और एक दूसरे के मारने पे तुले पड़े हैं। राजा जो है वो आर्मी का है, वो उसका बोलबाला ज्यादा है, उसने रानी को पकड़ के अंदर कर दिया और रानी का जो फौज है वो बाहर से देश से पैसा ले रहा है और वहां एक सिविल वॉर सा चल रहा है और इस सिविल वॉर में पूरा एयरफोर्स भी इस्तेमाल हो रहा है और वहां प्रॉब्लम हो रहे हैं। वहां प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं? तो उनके लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे यहाँ आएंगे और इनका शरण मिलेगा। हमारा, हम चाहे ना चाहे इनको शरण यहाँ मिलेगा, क्योंकि हमारे ये पूरा ट्राइबल लॉयल्टी ये बोलता है कि अगर आपका भाई है उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको शरण देना अनिवार्य है। और आपको पता होना चाहिए इस इलाके में, इन इलाकों में, पूर्वोत्तर इलाके कहीं भी आप चले जाओ, ट्राइबल लॉयल्टीज आर फार हायर देन नेशनल लॉयल्टीज। ट्राइब का जो सोच विचार है वो है कि भाई ट्राइब पहले, बाकी सब कुछ बाद में, तो देश वगैरह तो बाद में है। जब तक हम ये इसमें अगर उलटफेर नहीं हो सकता तो हमारा सिक्योरिटी भी कम ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें पता होना चाहिए कि म्यांमार के बगल में नॉर्थ में चाइना के साथ भी बड़ा बॉर्डर है, और चाइना के पार रुली नामक एक शहर है, उनका बॉर्डर टाउन, वो रुली और उसके इर्द गिर्द जो रहते हैं वहां, और म्यांमार में जो रहते हैं वो भी हमारे तरह ट्राइबल क्या लिंकेजेस हैं उनके भी, वहां भी आना जाना कॉमन है। और सो वहां से भी प्रॉब्लम्स हिस्टोरिकली म्यांमार में हुए हैं। राइट। लास्ट पॉइंट उन्होंने जो बताया है कि ये देखिए, दूसरा विश्व युद्ध के टाइम जापानियों ने ये म्यांमार के थ्रू थ्रू यांगोन और थ्रू कुनमिंग के रास्ते से, ये एक मैप आपको दिखाता हूं, ये अहम मैप है। राइट। अगर आप देखेंगे तो ये इलाका है मैंडले बीच में, ये म्यांमार के ऊपर मैंडले है। वो एक किताब है रोड पास्ट मैंडले बाय जॉन मास्टर्स, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि ये दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ था। लोग यहाँ इसके मैंडले के थ्रू यहाँ जिस तरीके से मैंने एरो दिखाया उस साइड से आए और कोहिमा तक आए। कोहिमा लास्ट था, जापानीज जापानीज जहाँ आए थे, हमने उनको लड़के उनको डिफीट हराया करा। और वापस डिफीट किया और वापस भेज दिया। इसमें बहुत हमारा खुद का हिस्ट्री है और खुद का सीख है, जहाँ बैटल ऑफ बॉक्सेस, एडमंड बॉक्सेस वगैरह वगैरह हुआ है, वो उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। पर अगर दूसरा विश्व युद्ध के टाइम में अगर जापानीज ऐसे आ सकते थे तो आज के दिन चाइना भी आ सकता है, क्योंकि इनका चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर उसी रास्ते से चलता है जहां जापानीज उस दूसरे विश्व युद्ध में यहाँ आए हैं। तो कहने का ओवरऑल तात्पर्य ये है कि जब तक म्यांमार में अस्थिरता है, इंडिया में अस्थिरता होगा। जब तक म्यांमार में अस्थिरता है और हमारे साथ ताल्लुक म्यांमार के साथ ठीक नहीं है, तो चाइना का जो खतरा है हमारे ऊपर बढ़ता जाएगा। तो इसका अनिवार्य ये है जो शौकीन साहब ने बताया कि हमें जो भी सत्ता में है म्यांमार के अंदर उसके साथ बना रहना पड़ेगा। हमारे पास कोई दो और रास्ता नहीं है। ये अच्छी बात है बोलना कि हमें क्या डेमोक्रेसी चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, पर रियल पॉलिटिक में अगर हम देखेंगे तो हमें जो भी सत्ता में है, चाहे वो तात्मदाव सत्ता में हो या कोई और पार्टी, ऑंग सान जैसे सू अभी की, ऑंग सान सू की का नेशनल डेमोक्रेटिक लीग का पार्टी सत्ता में है, उनके साथ हमें बात करना पड़ेगा। पर बेसिक चीज ये है कि म्यांमार जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। राइट। हमारे पूरे सिक्योरिटी के सिस्टम में। राइट। इसको बताने के बाद मैं एक चीज बताना चाहता हूं। सब लोग सोचते हैं कि चाइना के थ्रू, चाइना जो है म्यांमार के थ्रू आके जिस तरीके से मैंने एक वो एरो दिखा दिया, अटैक करेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये भी थोड़ा ख्वाब है। ये भी ख्वाब इसीलिए है, जिस तरीके से हम सोचते हैं कि म्यांमार एक बहुत प्रॉब्लम स्टेट है,
और एक टफ स्टेट टू डील विद है। चाइना वाले भी यही सोचते हैं, उतना आसानी से वो भी अपना हाथ अंदर नहीं डालेंगे, राइट। म्यांमार के अंदर हाथ डाल के इनके अंदरूनी विषयों में शामिल होना का खतरा अलग किस्म का है, क्योंकि वहां का प्रॉब्लम्स अगर आप अपनाओगे तो आपका इंस्टेबिलिटी और बढ़ जाएगा। उसी तरीके से अगर चाइना ने ज्यादा अपना उंगली दिया इसके अंदर, तो उनको भी लेने के देने पड़ेंगे। इसीलिए सब उस इलाके के सब, इंक्लूडिंग एशियन, म्यांमार को अलग छोड़ देते हैं कि भाई आप जो भी करना है आप अंदरूनी तरीके से करो, कोई इंटरफियर नहीं करता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो म्यांमार के साथ अगर हम डील कर रहे हैं तो, राइट। आई वुड लाइक you to highlight this point about this कोको आइलैंड्स, if you, right, क्योंकि ये कोको आइलैंड का चीज अभी इसमें आया है। ये कोको आइलैंड जो है ये हमारा अंडमान निकोबार का बहुत निकटतम है। और अगर आप देखोगे तो वहाँ ये कुछ दिन पहले ये मेरे ख्याल में इंडिया टुडे या किसी का ये दृश्य निकला था जिसमें इन्होंने दिखाया कि कोको आइलैंड में एक एयरपोर्ट है वगैरह वगैरह। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या मतलब है, आप थोड़ा बताएंगे और फिर हम सवाल ले लेंगे सबसे। सर ये जो कोको आइलैंड्स हैं ये आज की बात नहीं है। 20 साल पहले भी हमने ऐसे ही फील करा था कि कोको आइलैंड्स में चाइना ने म्यांमार से ये कोको आइलैंड्स ले लिए थे, और उधर चाइना अपना एक एयरपोर्ट और लिसनिंग पोस्ट जहां से वो स्पाई कर सकते हैं हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर, वो चाइना उधर इस्टेब्लिश कर रही है। आप देख रहे हैं सर कि ये जो इंडियन ओशन में है सर, ये जो हमारा जो अंडमान निकोबार का कमांड है उसके बिल्कुल साथ ये कोको आइलैंड्स है जो म्यांमार के नीचे। और अगर चाइना उधर आ गई तो कोई इसमें शक नहीं है, एब्सोल्युटली नो डाउट दैट it becomes a very major security problem for India. जब ये आर्टिकल निकला इंडिया टुडे में और इंडियन प्रेस में, तो द बर्मीज लीडर, the chief martial law administrator and the chief of the Burmese army or Myanmar army, has said this is not correct. Even China has given a statement saying that we have not come inside Coco Island. Just 5 days back, sir, आज क्या 17 तारीख है, 12 तारीख को the Burmese leader had landed in Coco Island and said that yes, an airport is being built, but it is being built for Burma or Myanmar and not for China. But हमारे लिए ये डर, ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम रहेगा। सो जब भी हम ये टॉक करते हैं ना म्यांमार के साथ, हमारा जो मेन इशू रहता है कि एक, आप हमको हेल्प करिए नॉर्थ ईस्ट के वायलेंस को स्टॉप करने के लिए, हमारा सबसे मेन चीज। दूसरा, 55, 56, 60 जो कैंप हैं आपके इलाके में, उनको आप खत्म कीजिए और उन लोगों को आप पकड़ के हमको दीजिए। बर्मा कहता है कि हम आर्मी तो भेज देंगे पर हमको कोई नहीं मिला। रीजन क्यों? रीजन है कि बर्मा के 2000 किलोमीटर के ओवर बर्मा के 4 आर्मी के यूनिट्स हैं। ये 4 आर्मी के यूनिट्स को कैसे वो पुलिस कर सकते हैं इलाका? सो ये जो इलाका है वो ये इंसर्जेंट ग्रुप्स को आउटसोर्स कर देते हैं कि आप ये इलाके को चलाइए, आप इन लोगों को सेफ रखिए और आप हमको जो उधर से मिलता है उसका आधा हमको दे दीजिए। ये इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट काइंड ऑफ अ बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमारे भी इंसर्जेंट ग्रुप बहुत खुश है कि हाँ वो भी ठीक है, हम बर्मा को, बर्मीज आर्मी को ये दे देते हैं और हम उधर से जितना भी कर सकते हैं, इलीगल स्मगलिंग, नारकोटिक स्मगलिंग, इलीगल गन रनिंग, जो इंडिया से, नागालैंड से, म्यांमार, जितना भी वो एक्सटॉर्ट करते हैं, पूरा का पूरा पैसा उधर ही जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं सर, वो रूबी माइंस, गोल्ड माइंस जो भी उनका है वो भी चलाते हैं उधर।
उसका भी पैसा मिल रहा है। तो ये कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, इसका कोई आंसर नहीं, राइट। जब तक हम आई अपने लोगों को नहीं बताएं कि भाई आप ये समझो कि आप जब तक इसको बंद नहीं करेंगे, कोई भी पावर बंद नहीं कर सकता। राइट, मैं इस जो जो भी आपने बताया, आई जस्ट ऐड, मैं ऐड करना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम इतना संगीन है कि अगर आपको पता नहीं, सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, म्यांमार इज वेरी रिच इन रूबीज, इट्स गॉट द बिगेस्ट रूबी माइंस इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इट हैज गॉट tremendous amount of gas and oil reserves, right? It has got tremendous amount of power. चाइना म्यांमार के साथ वार्तालाप चला कि वहां पावर प्रोजेक्ट्स, मित्सुने पावर प्रोजेक्ट वगैरह है जो सेल्विन और इरावडे के ऊपर जो बन रहे हैं, वो बन के चाइना इनसे पावर लेने के चक्कर में है। अगर आप पूरा देखेंगे तो म्यांमार इज इकोनॉमिकली सरप्लस, ठीक है, राइट। दूसरी बात जो जनरल शौकीन साहब ने बताया, एक अहम पॉइंट बताया, म्यांमार का जो पूरा चारों तरफ का इलाका जो मैंने पहले दिखाया है, वो पूरा जंगली इलाका है, और ये जंगली इलाका जो है ये म्यांमार के काबू में नहीं है एक्चुअली, बताया जाए तो, राइट। आपको मैं दिखाता हूं, या हाँ, अगर आप देखेंगे ये लेफ्ट के इसमें देखेंगे, जो जो भी ब्राउन इलाका है ये सब जंगली हिली वुडेड इलाका है, जो जिसके ऊपर म्यांमार का आर्मी का खुद का काबू नहीं है। तो उनका काबू नहीं है तो हमारा क्या काबू होगा उस इलाके में, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। और जैसे मैंने बताया, उतना क्या वहां घना जंगल है, राइट। तो बहुत प्रॉब्लम है उस इलाके में, यकीन मान के चलिए, ये प्रॉब्लम वैसे चाइना के लिए भी है, राइट। तीसरी बात ये है, एक और इम्पोर्टेंट बात ये इस इलाके में ये निकलता है कि ये जो म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और सदर्न चाइना, वो यूनान इलाका, ये सब इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ ड्रग्स आते हैं। दिस इज द, ये दो जगह है दुनिया में, एक गोल्डन क्रेसेंट जो अफगानिस्तान है, और दूसरा ये गोल्डन ट्रायंगल है, ये इलाका। जो ये दो जगह अगर आप जोड़ दोगे तो पूरा दुनिया के जो 90% का नशीली पदार्थ इधर से निकलता है, और तकरीबन इन दोनों के बीच में 30 या 40% नशीली पदार्थ एक गोल्डन ट्रायंगल से निकलता है। और इसीलिए यहाँ जहाँ गोल्ड नशीली पदार्थ और ड्रग्स का ट्रेड है, उसके साथ साथ क्या बोलते हैं उसको, ड्रग रनिंग के साथ आर्म्स ट्रेड भी आ जाता है, और बाकी इलीगल एक्टिविटीज भी आ जाते हैं, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस और हाथी वगैरह मारना, सब कुछ वहाँ वाइल्ड नॉर्मल है। एनिमल्स, वाइल्ड वाइल्ड एनिमल्स एनिमल, हाँ। सर। तो ये वहाँ लॉ नामक का चीज उसमें उस इलाके में थोड़ा कम है, और खास करके म्यांमार के नॉर्दर्न एरिया में। तो ये है प्रॉब्लम ओवरऑल। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, और वो एक और ये, बात थी सर, ये भी या कि म्यांमार के जो अंदर हैं, देर आर मोर देन 60 इंसर्जेंट ग्रुप्स यस, which are fighting the government. So गवर्नमेंट, Myanmar does not have the countryside of Myanmar under its म्यांमार control. अंडर इट्स ओन कंट्रोल, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। मैं एक और पहलू अभी फिर लूंगा। अगर आप देखेंगे तो पिछले 5-10 साल में हमारा जो गवर्नमेंट है, वो म्यांमार गवर्नमेंट के साथ, जो भी गवर्नमेंट है उसके साथ तालमेल अच्छा ही रखा। ऐसी बात नहीं है कि हमने अच्छा तालमेल नहीं रखा। इनफैक्ट आवर डीलिंग्स विद द मिलिट्री जनता, जब भी मिलिट्री Has रूल been में है, good, yes. इट हैज बीन गुड, राइट। और ये जो हमारा पुराना चीफ साहब है वहाँ डीए रह चुके हैं, और वो पर्सनली जाके उनसे बात करके, और खास करके जब ये कू हुआ वो बात करके हमारा फॉरेन सेक्रेटरी के साथ गए ये, और उन्होंने काफी हद तक तालमेल ओपन रखा, और यहाँ तक चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखा। मैं आपको एक पर्सनल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, म्यांमार गवर्नमेंट ये भी देख रहा है हमारा आईआईटी की तरफ कि किस तरीके से एजुकेशन वगैरह बढ़ाएं, एजुकेशन का लिंकेजेस वगैरह बढ़ाएं। कुछ दिन पहले म्यांमार का एक डेलीगेशन भी आया था, उनके साथ हमने बहुत फ्रैंकली बात किया, और दे लुक टुवर्ड्स इंडिया फॉर मेनी थिंग्स।
राइट, दे हैव अ लॉट ऑफ गुडविल टुवर्ड्स इंडिया फॉर मेनी थिंग्स. एक और चीज है जो विच वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट, एंड जब हम म्यांमार के पूरे बारे में बात करते हैं वो ये है कि इट इज टाइम फॉर अस टू डेवलप ग्रेटर मिलिट्री लिंक्स विद म्यांमार. क्यों? म्यांमार आर्मी या तात्मादाव का 80% इक्विपमेंट रशियन इक्विपमेंट है. ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और चीज है. इंटरेस्टिंग इसलिए है कि चाइना के निकटतम होते हुए म्यांमार में चाइना का इक्विपमेंट नहीं खरीदा, रशियन इक्विपमेंट खरीदा है. रशिया का बोलबाला काफी है म्यांमार के अंदर. हमारा इक्वेशन रशिया के साथ अच्छा है. हम क्यों ना इंडिया रशिया मिलके म्यांमार के साथ एक और नया रिलेशनशिप खोलें, जहां हम इनके जो जितने रशियन इक्विपमेंट वगैरह, ट्रेनिंग, अपग्रेडेशन, एमिनेशन वगैरह वगैरह सप्लाई करके, there is a requirement for us to establish a stronger line of military diplomacy with Myanmar. अगर हम ये स्थापित कर सकते हैं, और ये मेरा, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, अगर हम ये स्थापित कर सकते हैं तो चाइना का जो बोलबाला है म्यांमार के अंदर वो थोड़ा कम होगा. कम हो सकता चाइना है. का राइट, चाइना का बोलबाला आज के दिन वहां बिजनेस में ज्यादा है, आर्मी में नहीं. हमें मौका है उनके आर्मी के अंदर बोलबाला ज्यादा करने का. क्या हमारा गवर्नमेंट और हमारा आर्म फोर्सेस ये कदम उठाएंगे कि नहीं, ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है. अगर कोई मेरे से पूछे कि करना है कि नहीं, बहुत अनिवार्य है. राइट, तो ये है मेरे विचार. अगर आपके कुछ और विचार हैं इसके अलावा या इसको सपोर्ट करते हुए, जनरल शौकीन चौहान, प्लीज, विल हैव इट एंड देन विल टेक क्वेश्चंस. आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर. यू आर एब्सोल्युटली राइट. In fact, in one of the meetings when I had gone to Naypyidaw, the new capital of Burma or Myanmar, I was in uniform and मेरे को उनका जो होम मिनिस्टर था वो भी यूनिफॉर्म में था. उसने बोला, जनरल साहब आपके साथ थोड़ा बात कर सकता हूँ. मैंने कहा जरूर. और फिर कहते हैं कि मेरे को कि हमारी और आपकी सेंसिबिलिटीज में हमारा एक कॉमन एनिमी है, आपका और हमारा. मैंने उनको देखा. कहता हाँ, वी डोंट ट्रस्ट चाइना. या तो उनके दिल में ये है कि चाइना को ट्रस्ट नहीं करना. ऑप्शन नहीं है क्योंकि चाइना उनका नेबर है. ऑप्शन नहीं है क्योंकि उनको पैसा चाहिए, बट वो ट्रस्ट नहीं करते. दिस इज द राइट टाइम टू मेक श्योर दैट वी कंटिन्यू अ रिलेशनशिप विद देम. We be practical about dealing with whichever government there is in power. And yes, whether it is military aid or it is any other aid, we should be prepared to lock them in our embrace so that our Northeast, we can lift the Northeast out of this very dangerous internal security problem. आपने बिल्कुल, मेरे ख्याल में आज का पूरा शाम का बातचीत में ये आपने जो बोला है अभी, probably is the crux of the thing. हमारा पास ये मौका है कि म्यांमार को अपना सकते हैं और चाइना को आउट कर सकते हैं. और ये बिल्कुल आपने सही बोला है. और मेरा ये बहुत दिन से यही ओपिनियन है कि वी नीड टू डू मोर. अपॉर्चुनिटी है और मेरे ख्याल में ये अपॉर्चुनिटी रहेगा अगले 2-3 साल. हो सकता है उसके बाद ना रहे. राइट, and this opportunity has overstayed itself, and we need to take more prominent proactive steps to ensure that Myanmar is completely swings, क्योंकि Myanmar trusts India, Myanmar doesn't trust China. This thing will not last forever. अगर म्यांमार को ये महसूस हुआ कि भाई चाइना इंडिया के साथ विश्वास करके कोई फायदा नहीं है, हो सकता है कल के दिन बिल्कुल वो चाइना की तरफ मुड़ जाए. So this is the danger at this point of time, and we have to use this window of opportunity. Right. With this, I will take on some questions. I see some very senior people who have come. I'm very glad. I see Lieutenant General Dushyant, right, our friend. I think
he's giving some comments as also think we'll handle it. India has been fairly successful in dealing with Myanmar when it has been ruled by a military junta due to injunction of military diplomacy with civil diplomacy. Why don't we recommence the old process? Yeah, आई Shokin. टोटली एग्री सर, बिल्कुल मैं जनरल दुष्यंत से बिल्कुल सहमत हूँ that Right. this is our opportunity, sir. We have to be a part. We have to deal with the Myanmar army. They will always be in power one way or the other. And because they don't trust China, they have to have somebody they can trust. So while the government of India and while India itself remains a democracy, there is no reason that we cannot link up with the Myanmar army and give them support, teach them, and also, sir, in a period of time, nudge them back to democracy. I go with you. I'd like to add Relationship something. जरूर होना चाहिए, sir. There is Yeah, no doubt in that. I have no doubt. I have no doubt in whatever you're saying, Shokin. I'd like to add. You see, I'm reinforcing this business of trust. You know, see, Myanmar deals mainly with three major countries. एक चाइना, एक रशिया और एक इंडिया. आपने जो बोला, they don't trust the Chinese 100%. They trust us 100%. They trust Russia 100%. एक म्यांमार आर्मी का डेलीगेशन के साथ हमारा कुछ बातचीत हुआ तो चंद 4-5 महीने पहले. उस डेलीगेशन में 5-6 यंग ऑफिसर्स थे. They're all technically qualified officers. And the thing which struck me most was एक भी आदमी उसमें से चाइना से उसने अपना एमटेक बीटेक नहीं किया. वो सब सब ने इंडिया किया. में था. नहीं, रशिया. Correct. They all are Russian this thing, and they are seeking their thing how to make thing with us. In fact, let me put it on record. IIT Madras has gone and said, okay, if you want to send people to do BTech and MTech courses, we are open doors. We have said that to the delegation which came. Right? It was a full level delegation which had other things also. So it's not as if that we are not making an outreach. We are making an outreach. Hopefully, things what you have said or what we have said or what General Dushant has said will come about. But we need to be more proactive. Are we that enough proactive? I don't think so. That's my view, right? I don't think there's this thing. Okay. Second point which General Dushant makes is terrain and intelligence is a major restriction on cross-border actions plus military diplomacy has to recommence and greater cooperation is needed between the two defense forces. I don't think there's a second view on this at all, General Dushyant. इसमें कोई Sir, दो एक राय ही एक नहीं. एक मैं I just wanted to tell you this cross border actions जो जनरल Yeah, दुष्यंत ने बोला है. I had gone to Myanmar after that previous earlier raid that we had yeah, taken, and for the first time we had spoken about it. इससे पहले भी हम करते थे क्रॉस बॉर्डर टू हिट कैंप्स, पर हम किसी से बात नहीं करते थे, मीडिया में नहीं डालते थे. It was largely left unsaid कि yeah. insurgent group knew that we can hit their camp, but beyond that we would never talk. तो इस बार जब गए हम, the Myanmar army was extremely annoyed. और उनका जो जो दो टाइप ऑफ टॉक्स होती हैं, एक तो टॉक्स टेबल पे होती है और एक टॉक टेबल से दूर होती है. तो जो टेबल से दूर वाली टॉक्स थी जिसमें मैं इन्वॉल्व था, रिपीटेडली उन्होंने कहा कि आप करिए, हम जानते हैं कि आपने करना है, बात मत पर आप कीजिए. किसी को बात मत कीजिए, because our constitution does not permit us to permit any armed forces of any other country to operate in our country. It doesn't permit. Yeah. तो ये हमारे को हम सेंसिटिविटी दिखानी पड़ेगी सर, दैट अगर हमने कुछ करना है उनके कंसेंट के साथ जाना है, पर बात नहीं करना, बिकॉज Yeah, ईच I कंट्री suppose. हैज देयर ओन सेंसिटिविटीज. Yeah, I agree और with वो you, but क्लियरली उन्होंने बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में परमिटेड नहीं है कि एन आर्म फोर्सेस ऑफ एनी अदर can come कंट्री and do कैन this. ऑपरेट हियर. Yeah, I agree with you completely in what you're saying and what the sentiment were.
But I suppose the political environment at that point of time, with जो भी kind हो of sir, things but this is just a, it's a talk. yeah, I So we agree should with be, you. But it should be taken in that we should be sensitive about those whole sensitive, sir. affairs. Yeah, I agree with you there 100%. Okay. Now I have another interesting comment by General Shamiraj. I'm very glad that a lot of people are, people of high caliber and people who know about what they're talking are asking questions. That's So what ये makes this program very interesting, General right? Shami was also my brigade commander when I Yeah. commanding 8 Mountain Division Kargil. Excellent officer. Hmm. Yeah, I know. Yeah, right. I've known Shami from when he was a young officer. Okay, how do we negate the Chinese growing influence in Myanmar? You take a shot at it, So and maybe तीन I'll add चीज on to हैं it. which I would suggest, which we are Yeah, doing and we want to do more. एक तो sir, as we said, there are three different influences. एक economic influence है, एक cultural influence है, और third military influence है. yeah, So military to military हमारे जो ties हैं, that must keep improving. We must keep offering educational programs for the Myanmar army officers and the Myanmarese men and their children in India. We must educate them in India. Only with this education will they realize that democracy is the best way forward. So सबसे important बात ये है कि military to military जो relationship है, that must always remain, and we have suggested this solution. In military to military, we can also talk of arms, weapons, equipment, electronic equipment, bind them to a kind of equipment that binds them to us. Nobody produces or nobody repairs equipment, Russian equipment, better than India, cheaper. We can offer that to Myanmar. That we can do everything that you are sending it out somewhere else in a much cheaper yeah. way. You do it here. Yeah, I And with agree this with you. Atmanirbhar policy that India has come out with, there will be a lot of tech transfer of technology which we can help Myanmar with. Yes. ये सबसे पहली बात. Yeah. Economic, cultural. As I showed you in the first slide, sir, this movement of Buddhism took place in the first century AD. और जैसे ये Buddhism happened, 90% of Myanmar is Buddhist. Yes. So when we went there, a lot of the generals, of the officers of the Myanmar army wanted to come for pilgrimage to India, to go to Gaya. Gaya. I think, and we are doing it, sir, we must make pilgrimage movement easy for them. Let Yes. them come and see the Indian growth story. There is nothing like seeing a successful nation in your backyard to lock you in place with us. Yes. So along with military, sir, this cultural जो है हमारी ability culture है, it's a very strong culture. We must also make it available to all of Myanmar so that they don't want to fight us and to treat us as their brothers. Yeah. Third issue, sir, is economic. Medical, education, industrial, tourism. All these institutions, if built in the Northeast, can allow a person from Rangoon or from Napido to fly into India within 40 minutes for a medical treatment with the best of Indian Facilities. medical specialists available. Yeah, yeah. I agree with you. There is a huge requirement for medical tourism, for medical aid. So if we use our strengths, Jan Shankar sir, Yeah, you yeah, will yeah. I'm find that completely we with will you. be able to lock Myanmar in a embrace with Yes. which we will always have good relations. Yeah, there's no doubt at all. This Whatever you're bridge saying. that we have to these ASEAN countries must have the security problem on this bridge must be removed completely. And that See, can only go once we why get the what you're insurgency. saying. But what the human links which you establish, things like medical and all, which has got tremendous value, बहुत tremendous important है. optics, tremendous this thing. I am completely with you on this issue. Medical, education, tourism. ये तीन जो Yes, चीज हैं this will out of kill this. and religion.
annually. And that Gaya circuit, both Gaya circuit, बिल्कुल 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 sir. right? That will do a lot of things. I've always been of the opinion what you're saying, General Shokeen. Only thing is that somehow I don't understand why your government doesn't do it, but that's a different story. Okay, That's a we'll different take story. another question from General Dushyant. Chinese influence is directly proportional to Indian cooperation, or Asian highway is languishing. We need to recommence such projects. Yeah, your take, because you would have dealt with this very closely. आई हैव सर. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ना सर, दे नीड सिक्योरिटी, और हम ये सिक्योरिटी दे नहीं सकते. सेकेंडली, हमारी जो बिल्डिंग कैपेबिलिटी है, अनफॉर्चुनेटली दैट बिल्डिंग कैपेबिलिटी इज नॉट प्रोफेशनल इनफ. So these two things we have to rectify to make sure that people want Indian infrastructure, they recognize Indian infrastructure, and they recognize its excellence. No nation wants third-rate work. Yeah, अगर हम एक I रोड agree बना with रहे हैं, the Stillwell road बना रहे हैं, the road has to be made fully and very well. you. Yes. There's no question कि हमने roads बना दिए पर उनके और कल के culverts दिन नहीं निकल बनाए. गया वो. Culverts नहीं बनाए. कलवर्ट नहीं बनाए क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और का था. Correct. Yeah, So I all agree. this sir, जो हमारा सिटवे प्रोजेक्ट है, all these projects have to have the best infrastructure people building it. We have to give security to it, and security can only be done if we have a peace in the northeast. Yeah. And peace can only be done if we lock the insurgent groups into a peace talks with us and make sure that we get peace there. Yeah, I agree with And we you. make the people aware. So it is it's devil circuit sir. ये भी It's a chicken and egg story. बिल्कुल. तो साथ साथ Right. होना है. Yeah. We must Yeah. do it. There is no option sir. कोई option. Okay. Right. Shami has another question. Sir, China is having up to 15 billion worth of trade with Myanmar. India is only around 1.5 billion. Very difficult to match with China's deep pockets. I पर मैच करने की completely जरूरत नहीं है. मैच agree. करने की जरूरत, जहाँ You don't कल्चर need है to match. हमारे पास, हाँ, दिल है हमारे पास, Right, ट्रस्ट not है only हमारे पास, Dil. don't need to match. If you can, look, like I said, the important thing you have to differentiate between what we have, what is China, and where we have the opportunity. Our opportunity lies in the military, like what General Absolutely. Shokin said. You can give them ammunition, you can give them maintenance, you can give them repair, you can give them so many things, and tie them, right? Plus education, plus medical. Look, you have to understand that the southern part of China, Kunming and the Yunnan belt, are not very greatly developed. They're as Absolutely. poorly developed as ours. In fact, बिल्कुल probably even बिल्कुल worse. बिल्कुल बिल्कुल Right? The Ruli town is one of those backward towns. So बिल्कुल. it is even worse than Dimapur. Okay. So if you can give alternate systems to Myanmar and people in that area to come, okay, then you'll see a change in the whole thing. I think it needs a holistic change and a view, the vision of how we're going to handle Myanmar has to change. Yeah. If that vision doesn't change, I don't think much can change. Okay, I'll take two questions. We've only dealt with questions from General Shamiraj and this thing. We'll take two more questions before I wrap it up. All right. Okay. So this is the thing. Sir, to deal with our neighbors and the world as a whole, India should improve its manufacturing capabilities and support their needs, which China is successful at your views. कोई शक नहीं. Absolutely. We have to improve ourselves if people want to buy our goods. Yeah. We cannot give shoddy stuff, sir. ये तो नेपाल भी नहीं लेता. I was a defense attaché, as you are aware, in Nepal. Yeah. वो भी नहीं खरीदना चाहता because our stuff is not good enough. Yes. So The next we have to question. improve it, sir. कोई शक Yeah, नहीं the है, next- and you're absolutely right. Shritik Kotari asks, Sir, Chinese jets made by Pak which were sold to Myanmar are mostly grounded and facing problems. Pak engineers who went to Myanmar couldn't fix them. Why don't we sell Tejas to them? Look, Shritik, this is the point we are trying to make. Absolutely. Right? We need to improve our military contact with them through many ways, and the opportunity is there. Forget Tejas. Tejas is a long way off. You just upgrade their old Russian tanks, which is within our capability, which we do it every day within our own fleet, and you'll find a change happening. Right? Okay.
The last question for the day, which we'll take. Sir, long ago, India had a flourishing trade with Myanmar. I remember our elders talking about things like Burma take and oils, electronics, etc. Where did we go wrong and what stopped it? इसमें सर ये पूरा रॉन्ग ही तो बात कर रहे थे हम अभी तक. We were talking about this. We No, no, it's in okay. between when You might George as well tell Fernandez, because, yeah, when yeah, George Fernandez became our defense minister, he had Burmese insurgent group members staying in his house. yeah. So why would Burma trust us? You cannot have a defense minister who is in link with Burmese insurgent groups. See, And this is reality. It's yeah. reality absolutely clear, and everyone knew it. So in our lifestyle, in our systems, we have to be very clear and very sensitive to our neighbors. और जब तक we are clear that our neighbors are the most important part of India's existence, तब तक sir we will keep making these mistakes. See, the thing of neighborhood first policy is not a national. I mean, it's not a क्या बोलते हैं उसको? It's not a headline bursting story. It बिल्कुल has to be an actionable, you know, way of life. कोई शक नहीं सर. Unless you can have your neighbors around you, you're not gonna have growth. Unless you can take your neighbors along with you, you cannot grow, right? Uh, so there's no. We are still in a lucky position where our neighbors are not arming against us, like the Chinese neighbors of China, like Japan, South Korea, Philippines, Taiwan, Vietnam, and all these people are arming against China today. China actually, we don't realize, is in a worse state than us, right? At least we still have the opportunity to turn things around. Last time when General Chauhan came and spoke to us, he said, what is the opportunity in Nepal? What is the opportunity in Bhutan? Today we have spoken about the opportunity in, Myanmar. The opportunity is there. Are we doing enough? We have to do that introspection. In neighborhood first has to be an actionable policy visible to the people of the other countries. Only then you will get benefit out of it in your own country, right? So this is what we had to say today. We are not taking any further questions because I thought we had some very good and searching questions from the two generals who were on our show, right? I'm glad they asked these questions because those questions actually encompass many other questions which many others of you That's were right. asking, That's right. right? So I'm not taking. I'm sure before I close the show, I'll let General Shaukin Chauhan have the last word, and then we'll say Jai Hind. Over to you, Shaukin. Thank you, General Shankar sir. It was very enjoyable. Always great when the compare and opposing the other general knows as much, so the conversation can be led by each Oh, other. thank you. So that very happy, sir, that we were able to bring out the most important parts of of the Indo-Myanmar relationship. I will just reiterate three issues. Myanmar is extremely important to us. That's the first issue. Second issue, there can be no peace in India's northeast without Myanmar also putting its weight into bringing peace here. Because the entire northeast tribal groups, tribes, have their cross connects, tribal cross connects inside Myanmar. So any problem in Myanmar will affect northeast India. Third is Act East, जो हमारी policy है, it should not just be a buzzword. We have to actually act East. We have to be practical. We have to do things because Myanmar is important strategically, geographically, economically, and for security. So I would urge the decision makers that this is the time to seize, be clear that whatever we espouse as a government, we don't have to push on any other government. We have to deal with them. And the best way to deal with them is economically, is culturally, and militarily. Thank you very much, sir. Well, thanks a lot. Thanks a lot, General Shaukin Chauhan, and thanks a lot to all the viewers. And then my special thanks to General Dushan Singh and Shami Raj to have come and pose some good questions to us.
Uh, I felt very nice in today's talk because Myanmar has always been close to my heart, and having Yes, served in that that area in that 2 3 region. times Yes, in that region, and having hunted these elusive terrorists or this thing, so I can empathize with what was happening. Great evening, thanks a lot, and Jai Hind, and good Jai Hind, evening to sir. all of you. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind.